Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medibil Pro. I hope you guys will be fine and doing great and enjoying your good lives. So we are again going to start our session of remote work from home and online kind of a jobs for you guys. So today I have two more jobs for you guys, and if you're residing in Lahore, Punjab, Pakistan, then you guys can just go and apply in this one. And if you have little more experience, okay, then you guys can just go, and this is a good opportunity, and the salary is going to be near about 80,000 to 90,000 per month. Okay, so the first one job is going to be the medical biller, and the second job is going to be the AR executive. So this is basically the job number 19 in this basic course. Okay, so these jobs are for 2025, so you guys just can go and apply on this one. This will not take more than just 5 minutes for you guys. Okay, but before that, I just want to share some information with you guys as well, that as you guys know that our third batch is going to be started from 9th of January 2025. So if you want to get registered and learn this medical billing skill, then you guys can just go and apply for this one. Okay, so you guys can just text me on my WhatsApp number, that is 92300 6462 357. Okay, so if you have any queries and you want to register yourself, then you guys can just go and WhatsApp me. Okay, I have already uploaded a lecture, detailed lecture regarding all the information of this third batch. Okay, so you guys can just go and apply for this one. Okay, so back to our session of remote work from home and all that kind of jobs. Okay, so I am just going to share my screen with you guys. Okay, so you guys need to follow all the steps which I'm going to do. Okay, so without wasting time, let's start the lecture. As you guys can now see my screen, so this is basically the Minds On company, okay, that is based in Lahore. Okay, so you guys just need to go mindsoncompany.co, okay, in the Google, and you guys can just go onto this website. Okay, so basically this is company that is going to hire these two positions. So after moving to this website, then you guys can just go into the career section. Okay, so let's see what kind of jobs are available for us. Okay, so there are some IT department jobs as well. If you are in data scraper, business development, okay, and patient support executive, medical biller, AI executive, sales indicator. So these basically three jobs are available for you guys. The patient support executive is a plus point for you guys. Okay, so first one is this one, next one is patient support executive, and the third one is going to be the AR executive. So this is the patient support executive is going to be the bonus for you guys. Okay, so basically we are going to cover three jobs in medical billing today. So let's see what kind of a job responsibilities and job descriptions do we have for this one. So the first one is medical biller. We are looking for a medical biller to join our medical facility administrative team to process patient billing information. Okay, so position is medical biller. This is a night shift job. Okay, see, this is based in DHA phase 6 Lahore, and the salary is going to be the 80k to 90k, and the schedule or the timing of the office is going to be the 6 p.m. to 3 a.m. because you guys know that we are working according to the US schedule, so you guys need to follow that kind of schedule. So what should be the responsibility? Verify patient insurance eligibility and coverage for specific services and procedures. Okay, gather and organize necessary medical documentation to support prior authorization requests. Submit prior authorization requests electronically or through insurance portals. Okay, follow up on pending authorizations and addresses any issues that arise. So these are the basic responsibilities that you guys need to have. Okay, the next one is job requirements. So if you have minimum 2 years of experience, okay, and in prior authorization of medical billing role, then you guys can just go. And if you want to learn how to get authorization, then you guys can just move to my YouTube channel and you guys can see what is basically prior authorization and how you guys can just go and verify prior authorizations or get retro authorizations. Next, excellent knowledge of medical terminology and billing codes, strong understanding of healthcare insurance and plans and prior authorization requirements. Okay, so if you guys want to learn medical billing completely, okay, then you guys can just go onto my YouTube channel and you guys can see that there is a series of lectures. Okay, and if you want to learn basically all that kind of stuff in just 2 months, then you guys can just join my YouTube basic course. Okay, so that is going to be started from 9th of January. Okay, so the last date is going to be the 9th of January, and the first class will be initiated held on 10th of January, inshallah. Okay, so excellent communication and interpersonal skills. Yes, if you are working in a medical billing department, then you should have excellent communication skills. क्योंकि जब तक आपके पास अच्छी communication skills नहीं होती, because you guys know that हमें insurance के साथ बात करनी होती है,
ठीक है, इसके साथ ये है कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी होती है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन यू गाइस कैन जस्ट गेट डिफरेंट जॉब्स इन दिस सेक्टर. ओके, सो ये मेडिकल बिलर की डिस्क्रिप्शन सी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बाकी भी थॉरली देख सकते हो कि अगर आप इसके ऊपर पूरा उतरते हैं देन यू गाइस कैन जस्ट गो. सिंपली आपने यहाँ पर अपना नेम ऐड करना है, ठीक है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कवर लेटर. हाउ टू मेक अ कवर लेटर, आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर ऑन दिस वन. ओके, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ भी किस तरीके से आप लोग एक प्रोफेशनल कवर लेटर क्रिएट कर सकते हो. CV or resume, yes, I have already made few lectures on that well as well. आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से अपने रिज्यूमे को, अपने सीवी को एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल वे में क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से आप लोगों ने अपना जो रिज्यूमे है उसको क्रिएट करना है. ओके, और क्रिएट करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हो. ओके, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्म यू एग्री विद द स्ट्रॉन्ग storage and handling of your data by this website. After that you guys need to just submit this one. जैसे ही आप सबमिट करेंगे you will be having a confirmation email. आपको आपकी email एड्रेस के ऊपर भी इनकी confirmation email रिसीव हो जाएगी. Okay, if you are shortlisted then they will surely call you for the interview. ओके, इंटरव्यू की किस तरीके से तैयारी करनी है, यू गाइस कैन जस्ट गो ऑन टू माय यूट्यूब चैनल. वहाँ पर इंटरव्यू की एक अलग से सीरीज़ है, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑलरेडी मीन्स ये कि इंटरव्यू को किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है, किस क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू के में पूछे जा सकते हैं. सो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल. आप उसकी प्लेलिस्ट, इंटरव्यू की प्लेलिस्ट को मीन्स के सेपरेटली ओपन कर सकते हो and you guys can just verify and see all those kind of lectures. Okay, so this was one, the medical biller. Okay, next one is patient support executive. This is a full-time, same night shift. Okay, so the salary is going to be 70K to 80K. 6 p.m. to 3 a.m. the same kind of things. Okay, patient communications, communicate effectively with patients via phone, email, or in person to address their queries, provide information about services and support. Okay, coordinate patient appointments with healthcare providers, ensuring accuracy and efficiency in scheduling. Okay, so in this way, basically if you have a good communication skill then you can just go for this one. ठीक है, इसके अंदर अगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं अगर वो अच्छी है तो ये आप जॉब इजीली भी कर सकते हो. ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट इफ़ यू हैव गुड सर्टिफिकेशंस, गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, देन यू गाइस कैन जस्ट गो एंड अप्लाई ऑन दिस वन टू. ओके, सो इसका भी सिंपल वही प्रोसेस है. ठीक है, आप लोगों ने सिंपल अपनी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद रिज्यूमे अटैच करनी है और सबमिट इट. दैट्स सिंपल वन. मतलब ये है कि आपके पास जस्ट 1 to 2 मिनट्स मीन ये कि भी नहीं लगेंगे, आप लोग ये सारी चीज़ें इजीली कर सकते हो. लास्ट वन भी हम देख लेते हैं. ठीक है, सो इसके अंदर हमारे पास वही एआर एग्जेक्टिव नाइट शिफ्ट, office located in DHA phase 5, company overview, minds on company private, fast paced medical billing. Okay, responsibility to work on the accounts receivable, denial management, appeals management. Okay, so इसके लिए basically आपके पास experience होना चाहिए that how to fix the denials, okay, how to make an appeal, and how you guys are going to call different insurance and that get the claim statuses. So in this way you guys can just verify all that kind of a stuff and work on all that kind of outstanding claims. Okay, इसके लिए simple like answer patient calls and make insurance calls regarding inquiries pertaining assigned accounts, follow up on unpaid claims within standard billing cycle time frame. Okay, check each insurance payment for accuracy and compliance with the contract discount. So इस तरह की जो responsibilities हैं वो आपके पास होनी चाहिए if you are already a medical biller and you have worked in this AR department and looking for a new role. Okay, then you guys can just go and apply for this one. ओके, आप लोग मेडिकल बिलिंग की जो स्किल है उसको भी सीख सकते हो. सो किस तरीके से सीखना है, यू गाइस कैन अगेन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, और मुझे कि अगर फ्री में आप करना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी फ्री कोर्स अवेलेबल है, सो आप उसके साथ भी जा सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय पेड कोर्स दैट इज़ गोइंग टू बी द my third batch that is going to be started inshallah from 10th of January, and you guys can just join that one too. ओके, सेम प्रोसेस इज गोइंग टू बी फॉर दिस वन एज वेल कि हाँ भी इजीली आप यहाँ पर आकर इसके अंदर मीन्स है कि सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करें. और मैं अगेन कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के पास कवर लेटर किस तरीके से बनाना है और इसके साथ साथ आप लोगों की जो रिज्यूम है वो अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल होनी चाहिए. सो यू गाइस कैन जस्ट मेक दैट वन after watching that kind of a lecture on my YouTube channel. Okay, so if you guys have any kind of a questions regarding कि हाँ भी किस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना है यार और क्या मीन्स कि अप्लाई करने में तो कोई जाहिर सी बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए.
अगर और कोई आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अगर आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, देन यू गाइस कैन जस्ट लेट मी नो, ठीक है, मैं उसके ऊपर भी आपको असिस्ट कर सकता हूँ कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सो मीन्स ये कि इंशाल्लाह सो यू गाइस विल बी सिलेक्टेड। और इसकी जो सैलरी है दैट इज़ गोइंग टू बी 60,000 to 80,000 per month। Okay, so that is a good salaries for all the three jobs. So if you guys are still looking for different kind of a jobs in medical billing, then you guys can just go over there and apply on these ones. Okay, so एक अच्छे posh area के अंदर में ये कि company located है, so you guys can just go and apply on these ones. So this was all about today's lecture. So these jobs, medical biller and AR executive. So you guys can just go and earn around 80k to 90k per month, inshallah. So if you guys feel any kind of a difficulty while applying, okay, and if you guys need any assistance regarding medical billing or coding, any kind of a stuff, then you guys can let me know. You guys can comment on this video as well, okay। और एक बात और चीज़ याद रखनी है कि हाँ भी आप लोगों ने इस जॉब के ऊपर जल्दी से अप्लाई करना है, क्योंकि यू गाइस नो दैट दीज जॉब्स आर टाइम सेंसिटिव, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जॉब्स मीन्स ये कि यहाँ से रिमूव कर दी जाती हैं। देन नॉर्मली स्टूडेंट्स से दैट सर दिस जॉब इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, आर देयर आर नो जॉब्स अवेलेबल, सो यू गाइस नीड टू वर्क ऑन दिस वन टू, ओके। सो कोशिश करनी है कि हम भी जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर अप्लाई करें, अपनी रिज्यूमे बनाएं। और अगर आप लोगों ने अपनी रिज्यूमे भी मुझसे मुझे है कि वेरीफाई करवानी होती है कि हाँ भी सर देखें कि हाँ भी ये ठीक बनी है, यू गाइस कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ओके। So don't forget, my next batch is going to be started from 10th of January, 9 January तक आप लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। So if you guys have any questions regarding my third batch, then you guys can just WhatsApp me on 0300 6462 357. Okay, and you guys can email me as well on the email address which is just depicting or revealing on the screen. Okay, so inshallah we'll meet in the next lecture with different kind of a stuff in medical billing. Okay, till then, take care of yourself and of your family, and don't forget to remember me in your kind prayers. Jazakallah, take care, Allah Hafiz, goodbye.